बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज कुछ अलग से करने का इरादा है, तो आज हम कुछ नई चीज़ लेकर आए हैं आपके लिए इंशाल्लाह। तो आज का वीडियो पूरा देखना, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। आज हम लेके आए हैं इंटरनेट की दुनिया के अंदर से काफ़ी सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स जो कि हॉन्टेड है, भूतिया हैं, तो जिन्नातों के भी मामलात हैं, जिन्नातों को रियल कैमरे में कैप्चर हुए वो लोग, और भी कई अरवाहें रूहें वगैरह भी कैप्चर हुई कैमरे के अंदर में, रियल लाइफ के अंदर में, रियल कैमरे में वो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। वो कुछ क्लिपें मैं दिखाऊंगा। आज का मेरा पॉडकास्ट रहेगा, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, और आज का स्पेशल गेस्ट रहेगा मेरा भतीजा हाजी बाबा। आ जाओ हाजी बाबा। आज हम दोनों, ये हमारा भतीजा है हाजी सैयद मोहम्मद याहिया चिश्ती बाबा, ठीक है। हाँ, तो आज हम दोनों बैठ करके कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे, और उसमें हमारा रिएक्शन क्या रहेगा वो देखिएगा आप। आज की क्लिप पे जो मैंने बताया, जैसे आपको रियल फुटेजेस है जो कैमरे के अंदर में रिकॉर्ड हुई, कई लोगों ने दुनिया भर में रिकॉर्ड करी इन क्लिप्स को, और काफ़ी सारी क्लिप्स में कुछ खास मैंने सेलेक्ट करी है, वो इंशाल्लाह मैं आज आपको दिखाऊंगा, और हम दोनों का रिएक्शन देखना आप कैसा रहेगा उसके ऊपर में, क्योंकि अलग अलग नज़ारे आज की वीडियो में आपको होने वाले हैं। बहुत कमी से ऐसे वीडियो क्लिप्स मिलते हैं देखने के लिए। तो इंशाल्लाह चालू करते हैं वीडियो को, बिस्मिल्लाह करते हैं। The streets. बिस्मिल्लाह, चालू हो वीडियो। Some sort of shadow imposing and hunched over appears to be stalking through the room. Posted by The Clowning on Reddit. They seem a little shaken up over the video, considering it was sent by a trusted member of their family. Would such a close relative send their family fake ghost content? Now, there was something rather than someone scoping out the rooms come nightfall. देखना आप, काली परछाई क्लियरली वहाँ निकली है दीवार में से और दरवाजे से बाहर की तरफ गई। Marjabar Raja Khan Reku posted this video showing a crowd performing the Salah, an obligatory form of worship in the Islamic faith, which involves praying 5 times a day. During the session, one of the cameras captured something pretty weird. See if you spot it. मस्जिदुल हराम का वीडियो है भाई, कुछ जिन्नात या ऐसी कुछ चीज हो सकता है। देखिए, हाँ, ये सफेद से कुछ दिख रहा है ना। हाँ, ये सफेद से कुछ दिखा, ये भागता हुआ तरफ गया। कोई जिन्नात है, कोई फरिश्ता है, कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह बेहतर जाने। The figure seems to glisten slightly as it runs away really fast. The low resolution is pretty annoying, I know, but the uploader had to rewind the TV and film it with his phone when he spotted the figure. So yeah, it could be edited, but it could also be raw paranormal footage. Was it something else though? Let us know your thoughts in the comments section. There's always an underlying feeling of paranoia when the dark blanket of night covers the streets. Anyone could be out there. Indeed, anyone. Or anything. Because this clip, posted by Paranoid Normal, an unanswered universe, will have you worrying less about thieves. पीछे बकायदा टच किया। ये ड्रोन फुटेज है, तीसरी फुटेज है। तकरीबन 20-25 अलग अलग वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये कब्रिस्तान का कोई फुटेज है, ड्रोन का फुटेज है। दिखा कुछ दिखा बैठा वहां पे, ये उठ के गया। देखा आपने कुछ? ड्रोन उसने वापस
भगाया, रिटर्न किया. Scared witless by the creepy sounds like cries and moans they heard, they decided to retreat to the safety of their van and flew a drone instead. And that's when they captured what looks like a creepy figure coming out of the ground. देखा white. The entity just appears from the ground and vanishes into darkness. Try as they might, they never saw it again. Would you even go back there after this? Let us know in the comments. 4. If you've ever worked at a shop or a marketplace, you probably know the disdain you feel when the stacked totes come toppling to the ground. But have you ever stopped to wonder how exactly they fell in the first place? सब्जी मंडी है रे तो चेन निकली अपने आप. वो गया, ये पूरा हुआ आया, वो बचा आदमी. ओ आदमी का ही काम लग जाता. At first, you can just put this down to unbalanced weight finally falling over, but take a look at the chain dangling just above the table. Why is it swaying when the other ones are dead still? And what about the way that yellow box was yanked? Surely a strong drought would have toppled some of the other boxes too, right? What do you think? Just the wind? Or a ghostly presence trying to hit the dude and failing miserably? Let us know. Scenes you're about to watch will make you consider leaving the lights on tonight. Let's watch. ये आदमी सो रहा है, वही क्या हो रहा है उसके साथ. ओए ओए, उल्टा उठा लिया उसको. या अल्लाह रहम कर मेरे मालिक. उसको उठा लिया भाई पूरा. सीधा बैठ गया, पढ़ने बैठ गया, कुछ अल्लाह अल्लाह करने बैठ गया, यूं करके ध्यान से बैठ गया. The video starts out quite calm before what could only be described as an unholy presence takes over. He is grabbed by the legs as if someone or something was attempting to take him away. The man knew he had no choice but to fight, free himself and avoid a catastrophic ending. And boy, did he fight his way out of this one. It's safe to say he'll be spending the rest of the night wide awake. That's if he'll be spending the night at the house at all. On that same night, the surveillance camera outside picked up something at the house as it made its way out of the building. Was this real footage or poltergeist activity caught on camera? What could have lifted the man's legs like that when we can't see strings or signs of video masking techniques? The guy seems pretty disturbed after the incident too. And what the hell did the CCTV camera capture outside of his house at the exact same moment? Have you ever heard a floorboard creak or felt the staircase shake slightly, as if someone is walking around, even though you know there's nobody there? Well, that's exactly what happened to YouTuber Paranormal Me, except he definitely heard more than a slight bump in the night. Aşağıdan sesler geliyor, bir şeyler oluyor. Özür kelimeti la iddamatım işerim ahlak. Özür kelimeti la iddamatım işerim ahlak. Bismillah. अरबी बात कर रहा है ना. La ilahe illallah. Allahu ekber. Kim o? Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillah. La ilahe illallah. Biri geldi. Karşımda. Yine. Özür kelimeti la iddamatım işerim ahlak. Kendini göster. Karşımdasın. At first, we thought it was just somebody running up the stairs off camera, but the sound of those inhuman growls and booming footsteps stopped right in the same room, but there was nobody there. Perhaps that building wasn't as abandoned as he once thought. Have you ever been lounging in the lap of luxury whilst on holiday? It often feels like nothing could ever go wrong, doesn't it? But as you'll see in this clip posted by the Dark Dimension, you're never that safe from a swift paranormal punch in the face.
देखो कोई काला साया दिख रहा है पीछे खड़ा हुआ वहां पर लगी, उसने देखा लड़की ने, उसने इशारा किया, बताया, गायब हो गया वो। फिर निकला उधर, अभी निकल गया, देखो फिर आया, फिर देखा उसने, फिर भागता हो गया, फिर खड़ा हो गया, वो देख रहा है, फिर छुप गया। The girl closest to the edge of the poolside is almost frantically trying to alert the rest of the group to this creepy-ass figure. How they didn't see it is beyond us, but what are the bets they all wet themselves in shame and terror when they watched this footage back. It could have just been a small child messing around and trying to scare the guest, but apparently children aren't allowed in this specific hotel. So what the hell is going on here? Picture this. You're sitting with your friends, a few beers cracked open, someone's got the guitar out, and you're all feeling mellow in the gentle haze of dusk. The last thing you'd expect to see there is a colossal apparition standing just outside the door. Unfortunately, that's just what happened to the people in this video, posted by Mr. Jacob van Heerden. Something is looming over the group through the door. And then, in the blink of an eye, it's gone. The apparition does seem a little weird, but what do you guys think? Real or fake? Let us know. Adventures Jassim, The Dark Knight, has made a few well-earned spectacular appearances on our channel in the past. His love of scoping out the place is so abandoned and so mystical that nobody else dares visit, has secured him as one of the most hardcore paranormal investigators we know. But as brave as he may be, the activity he experiences still leave him on his spare pants by the end of the night. अरे हमें यार कोई दिक्कत नहीं, ख्वाजा बाबा हैं, जिंदाबाद, अपन ख्वाजा वाले हैं। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया उसने, उसी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खतरनाक जगह है, भयानक खंडर है, सालों साल कोई नहीं आया। टोपो का हाल देखो कैसा हो रहा है। जिन्नातों की बस्ती होंगी यहाँ पर, जिन्नात होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, अल्लाह की मखलूक काफ़ी सारी जो हमारी उनका किचन है। सऊदी में इस तरफ जो यूएई वगैरह में छोड़ देते हैं वो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, तो उसमें जिन्नातों का बसेरा हो जाता है। कोई कहते हैं ना कि 40 दिन किसी घर में अगर दिया बत्ती रोशनी वगैरह ना हो तो वहाँ पर में जिन्नातों का, बुरी चीज़ों का बसेरा होने लग जाता है। बिस्मिल्लाह। जब भी अपने घर में रहें, कहीं बाहर भी जाएं तो कुछ छोटी छोटी 0 वाट का बल्ब भी जला कर रखें। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़, करके ना जाएं कहीं बाहर। खामोशी कैसी हो रही है यहाँ पे इनका। गेट अपने आप बंद हो गया, गेट अपने आप बंद हो गया। वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। भाई कुर्सी गिरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़। कुर्सी उठा के देख रहा है भाई।
कुर्सी गिरी है, कुर्सी बकायदा अपने आप गिरी है। But hey, let's grab the educational side of this compilation again and let our Middle Eastern Rambo teach you how to deal with a pesky poltergeist. इस आलम में, इस दुनिया में कुछ दुनियावी चीजों से इंटरेक्ट कर सकती है, हो सकती है उनकी जगह बदल सकती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ला यअख़ुज़ुहु इल्ला बिइज़निहि يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। ये वही सरकार का अल्लाह का कलाम पढ़ के दी हमने लात। बेशक आयतल कुर्सी की बहुत ज्यादा फजीलत है। आयतल कुर्सी शैतानी चीजों के लिए बहुत, and that's, my friends, is how you show who's the boss. But Jassim is not the only one to step into this very building to have a dick measuring contest with the entity. Another paranormal investigator, adventurer Allah, decided to go there another night and do a little more digging, but he underestimated just how much danger he was getting himself into. ये कोई जिन्नात का बसेरा है यहाँ पर में, जिनों की बस्ती वगैरह है जो ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे। मामा का किसी की जगह उंगली भी नहीं करनी चाहिए मामा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसमें अल्लाहु अकबर। मामा किसी को जाके बिस्मिल्लाह الذي لا يضر مع اسمه شيء. استودعوني يا جماعة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حصنت نفسي بلا إله إلا الله، حصنت نفسي بالحي القيوم. गेट फिर बंद हुआ अपने आप, वही गेट है जो उससे पहले वाला भाई कहता ना। दूसरा किसी को है, भाई अलग था। لا يا جماعة لا. The doors just kept slamming and swinging like there's no tomorrow, and something seems to be trying to chase him out. Although we can't see exactly what, something has actually hurt him during this investigation. उसके हाथ पे मार दी, قسم بالله جاب وجهي. चोट मार दी किसी तरह। उसकी चीजें तकलीफ पहुंचा देती है किसी न किसी सूरत। बकायदा कहती पूरा हाथ छिल गया उसका, गिर गया या क्या हुआ मालूम नहीं। While it's just a small graze, he sounds distraught. What could have shaken him up so bad? Well, we're about to find out. अभी तक सबसे डेंजर कौन सी लगी? يا جماعة يدي تعورني. ये वाली है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. उसकी आवाज़ें अलग निकल रही है। لا إله إلا الله. भी है, उसको डर भी लग रहा है। ईमान मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए अल्लाह की जात पाक के ऊपर में। जाएं क्यों लेकिन यार ऐसी जगहों के ऊपर? जान का रिस्क रहता है भाई, सीधी सी बात है। ये कहाँ हो गया? والله بخطي علي اقسم بالله. اكيد فيها شيء يا جماعه. बाहर गिरी है और एक ड्रॉप खुली जा रही है।
ये घबरा रहा है, डर रहा है चीज से, वो चीज डरा रही है। इससे पहले वाला बंदा जो था उसने अल्लाह कलाम करके लात मारी, आयत कुछ पड़ गई, एक जगह तो टुकड़ा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह يا جماعة أقسم بالله العظيم مفترين هذول. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. Curtains can often stir up a little discomfort, aiding the ever-growing dread you feel that someone or something could be hiding behind them. Brick Whimsy on YouTube captured some footage that will have you double and triple checking behind yours. The cameraman seems to be taking us on a gentle night tour of an empty hospital. But as they carefully tread forward, something startles them into whipping around, only to discover that they might just not be alone. Ui ui, पर्दा गया, पर्दा अपने आप खुल गया. Now there was nobody around to pull that curtain, and there was nowhere a string could have been tied or pulled. So what does this mean? The cameraman sprints away after checking behind the curtain. Can't say we blame him. Here's to hoping he got out of there before whatever pulled the curtain back decided to grab a hold of him too. Let us know in the comments, and while you're at it, don't forget to bump the like button and subscribe if you haven't yet. और टारगेट किया है 100 लाइक का. 100 लाइक अगर इस वीडियो के ऊपर आते हैं इंशाल्लाह, तो आगे इस तरह के और वीडियोस बना करके डालता रहूंगा. पॉडकास्ट तो मेरी जो सीरीज है कंटिन्यू इंशाल्लाह रहेगी. If you watch the footage closely, you can see a family sitting beside an empty table when one of them spots a chair moving on its own. She tried to get a closer look at the chair. However, to her shock, she couldn't find anything that would give her a logical explanation for what happened. The restaurant co-owner, David Folds, insisted that the video is genuine, played that moment multiple times and kept an eye on the family who could potentially be pulling a string. But none of them seemed to do any movements that could indicate some trickery being at play. Could this be a very clever stunt, or is the Crony Sports Grill restaurant truly haunted? Let us know what you think in the comments section. Back in her old home, Sabia L began experiencing things that made her hesitantly peer behind every corner. But whatever is haunting her home seems to be pretty happy letting us all know where it is. Watch closely. सब बंद है अभी. हाँ, अरे ड्रॉर वगैरह, किचन की सब शेल्फ और ड्रॉर वगैरह बंद है उस वक्त जो फ्रेम में देखा आपने. लाइट बंद हुई किचन की, अपने आप लाइट बंद हुई है. चल बंद हो रही है. असल में अभी एक्चुअल में वक्त भी रात के 12 बज रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो क्योंकि मेरे को वो फील लेना था नाइट का, ये अंदर गई कुछ भी नहीं है, ड्रॉर वगैरह खुल गया अपने आप. ये रात के वक्त इस वीडियो को देखने का कैसा नजरिया हमारे भतीजे का भी रहेगा और हमारा भी रहेगा. शेल्फ खुल गए, लाइट चालू बंद हुई, लाइट बंद हुई वापस. कोई आया ना, कोई जगह हल्का झांका कोई. The room is engulfed in darkness once more, काली सी परछाई and it looks like someone couldn't stay hidden back in the shadows. ये आया देखो. Is that the culprit behind all the chaos? मैंने बोला ना रियल फुटेजेस है ये, जो मैं आपको आज के वीडियो में दिखा रहा हूँ. इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं. इंशाल्लाह अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैं आगे भी ऐसे वीडियोस कलेक्ट करके दिखाता रहूँगा.
open stil. Dat is dat vieze keukentje. दरवाजा खुला था क्या अपने आप? Kijk, dat bedoel ik dus. लाइट फिर चालू बंद होने Dat is het licht. Vark, kom eens op daar. Dit gaan we doen weer. कोई नहीं है अंदर, कैमरा लेके गई है बंदी, हाथ पे कैमरा, लाइट चालू बंद हो रही है, जैसे अंदर गई कुछ भी नहीं वहाँ पे। गेट भी चेक कर रही है कि गेट खुला हुआ है या बंद है बाहर। और लोग क्या अजीज बाबा, gewoon echt helemaal niemand. डर तो नहीं लग रहा आपको? लाइट कैसे बंद हो गई? Zie je zo meteen. Kijk. Dat bedoel ik dus. अंधेरा हो गया भाई पूरा, अब चालू हुई है। Het is hier echt helemaal niemand. क्या हाल होगा यार बेचारी बंदी का यार। Kijk. ओह ये अपने आप मिल रहा है भाई सामान, कप या मग कुछ है ये। ये भी पोल्टरगाइस्ट वाला वीडियो है भाई। ये नीचे गिरा, फिर सामान फेंका। क्या क्या होता रहता है बाबा, अल्लाह बचाए। इसलिए कहते हैं हमेशा जिक्र इलाही करते रहो भाई। Gekke dingetje. लाइट अपने आप रही है छत की, लैंप। Is dit zo? Is goed, hè? ओरिजिनल रिएक्शन देखने को मिल रहा है आपको। पर्दे के पीछे कोई है, खुला, अपने आप खुल गया। देखो तो छोड़ दिया किसी चीज से पर्दा हो, पर्दा बाकायदा अपने आप खुला, फिर अपने आप छोड़ दिया गया। कोई भी नहीं है पर्दे के पीछे। Ramen zijn allemaal dicht. Oh, jeetje. Oh, wat is dit, ja? Daar, jeetje. कुछ चीज किचन से बाहर फेंकी ना। Dicht. Jezus. अकेली बंदी कैसे रह रही है यार, ऐसे घरों में। बाहर ऐसे ही रहते हैं भाई, बाहर के लोग अकेले रहते हैं। वो लोग नए नए क्या क्या मुसीबतें झेलते होंगे, उनको मालूमात ही नहीं है इन चीजों के बारे में। Well, at least it was a bottle and not a knife. Her courage here is endless, बोतल है, as no matter how कोई बोल रही terrified बोतल she फेंकी है, is, she चाकू वाकू always नहीं scopes मिला। out the whole अल्लाह का area. शुक्र है। The footage from this video was filmed slightly differently. Rather than walking around and recording, she has left the camera overnight on a wide shot of the living room and kitchen doorway, and she captured some terrifying footage. कुछ दिख नहीं रहा है, अपने आप बंद हो रहा है। सामान गिरा शेल्फ में से, बुक गिरी है। फिर एक और बुक गिरी।
क्या करेगा भाई? 2 बुक गिर गए। तेज बोले यार अजी अब्बा। बुक गिरेगी। किचन में सामान गया, ये गिरा किचन का सामान। This was the last straw. On the 12th of September, Sabia L packed up her stuff and moved into a new residence. When she moves into her new place, everything seems fine. She felt like she had finally released herself from the chains of her previous apartment. But just like any other story, it didn't end there. हादसे हो रहे हैं। बंदी ने पूरा घर चेंज कर लिया, लेकिन सामान तो कोई मूव किया है। क्या वो चीज उस बंदी से अटैच है, उससे जुड़ गई है, या उस कुछ सामान है घर के अंदर में मौजूद जो उससे जुड़ गई है वो चीज? अल्लाह बेहतर जाने। यहाँ पे भी वो चीज वापस शुरू हो गई घर के अंदर। देखो लाइटें वगैरह वापस चालू हो ना, चालू हो रही है, बंद हो रही है अपने। ये दूसरा घर उस बंदी का। वो बंदी शुक्र मना रही थी मालिक का कि घर चेंज कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन प्रॉब्लम और हो गई अब। जहाँ से लाइट बंद हो रही है वहां चेक करने जा रही हो। क्या है यार, कुछ भी नहीं है। लाइट तो बंद होगी, हो गई। Tori, helemaal klaar mee. Back to its old ways. चीज हिलने लग गए वापस से। You. वो लाइट बंद। तो खड़ा हुआ यार कोई, देखा? तेरे को दिखा नहीं कुछ? काला आदमी देख, अभी देख, अभी दिखाई नहीं चाहिए। खड़ा हुआ था, काला साया खड़ा हुआ था एक, आधे सेकंड के लिए दिखा था वो। लाइट ही बंद हो गई भाई। A dark figure stood looming at the end of the hall. देखो खड़ा वाला देख। And as she staggers back into the living room, she hears it move. It seems to be more active than it was in the old apartment. Could the spirit be attached to an item she took with her on the move? इस अपार्टमेंट में हो गया वो। She posted 2 terrifying videos of night vision doorbell camera footage. Have a look for yourself. नेदरलैंड है जो हॉलैंड है ना, वहाँ का वीडियो है ये। No matter where she is, Sabia L's bookshelves are never safe. सामान नहीं गिर रहा है। अच्छा। Furniture also seems to have a life of its own now too. 19 दिसंबर 2021 रात को 11 बजे सोफा खिसका दिया भाई उसने तो। बहुत ताकत चाहिए सोफा फर्नीचर वगैरह खिसकाने के लिए। Every ornament or object she has laying around her living room gets thrown around. Some of her items are dragged across the floor for good measure as well. Take a look. अल्लाह की न जाने कितनी मखलूकात इस दुनिया में तमाम मालूमों के अंदर फैली हुई अल्लाह की कुदरत से। वो फेंक रहा है यार, तो सामान उठा उठा के फेंक रहा है, तो क्या मालूम जिन्नात है क्या है। सूरह बकरा 40 दिन अगर घर में विर्द कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी फजीलत यही है कि हर चीज बुरी चीज से वो घर पाक रहता है अल्लाह के हुक्म से। किसी आलिम साहब को, मौलाना साहब को बैठ करके पढ़ा सकते हैं, या कोई नहीं मिल रहा आप खुद बैठ के पढ़ें अल्लाह का नाम लेकर के, और या कम से कम यूट्यूब के ऊपर में जो ऑनलाइन रहते हैं सूरह, अलग अलग सूरह, वहाँ पर में आप उसको चला के छोड़ सकते हैं। Her paranormal investigation skills are some of the best that we have seen.
and these hauntings are not over for her. They say ghosts tend to take over the house only when the owner is out. This creepy-ass Facebook video uploaded by firefighter Greg is the perfect example of that. Greg lives pretty close to the haunted place where the eerie footage was captured, which happens to be his colleague's house, only to find something utterly bone-chilling. Let's take a look. If you follow the highlighted area closely, right after the lights go out, you observe a sinister figure, as well as hearing some footsteps when whatever was there made its way across the room. You're probably thinking that this could have been an intruder moving in front of the camera, but everything points to something more sinister. They called the police thinking what most of us would have thought, burglar in the house. But on getting there, the police found absolutely nothing other than the lights off. No forced entry and no one was inside at all. After this unexplainable event, the uploader also stated that other weird things occurred in the house before camera. Ryman8 uploaded this bizarre video on YouTube showing some sort of eerie figure or energy strolling out of the room before it eventually sets off the intruder alarm. Imagine capturing something like this inside your home while you're out. Would you sleep there again? Let us know in the comments. And while you're at it, don't forget to bump the like button and subscribe if you haven't yet. CCTV has been a staple ever since the 1940s, and it's helped us catch criminals, danger, and the creepiest thing of all, paranormal activity, which is especially terrifying when it's caught in a narrow little hallway. Did you catch it? It's blink and you'll miss it. Whatever that thing was, it certainly doesn't look friendly. Some commenters seem to believe that this could have been sped up footage of somebody stealing bits and bobs off of the trolley, but something about the body language and the shadowy aura surrounding the figure makes it seem a little more sinister than a bit of petty theft. And this isn't the only strange happening caught in a hallway. Look, sometimes even those in the afterlife get a little peckish. The entity in this video, captured by Julia, can't get enough of the kitchen utensils. Take a look. वो आया भाई, बंदा आया लाइट जला के चेक करने, क्या गिरा भाई? Это фигня упала. किसी घबराई गई है बेचारी, बेचारा देखो कितने घबराहट हो रही है उसको. На гриле переключи. На гриле, на меню. Вчера там масло. अपने आप चालू हो गई वो, टेंडर अपने आप चालू हो गया, अंडे अंडे फेंक दिए उसने बेचारी. कैसी घबराई हुई खड़ी है वो, पूरी हिल कांप रही है. अब देखते हैं भाई अब क्या होता है. किचन वाला भूत है भाई ये. वो गैस चालू अपने आप, चूल्हा अपने आप चालू. फ्राई पैन हिल रहा है ना, फ्राई पैन अपने आप. इसको भूख लग रही है भाई, ये भूखा भूत है पक्के में. कुछ खिला दे भाई इसको तू भी यार. बंदा अंडे निकाल रहा है, अंडे रख दिए उसने तो ले बना भी ले, बना के खा ले.
Seems like this poltergeist just wants to cook some eggs and also cause people to throw them halfway across the room by turning random things on. Honestly, no idea what could have moved the kitchen utensils so smoothly. How on earth did the pan move like that? And how did an invisible force turn the hob on? Strings physically can't do that, right? Seems like right at the end, the guy decided enough was enough and thought he might as well give the poltergeist some eggs to cook while it was at it. In El Dorado Airport in Bogota, Gulkari Channel recorded some truly unexplainable footage. While the airport was closed for quarantine, a couple of the skeleton staff working there mentioned some strange goings-on near the women's bathroom door. So this dude decides to grab a camera and storm right in, only to flee seconds later, wishing he'd brought his spare pants with him. Bueno, voy para adentro. La sangre de Cristo me cura. Hola, hola. Hola. Hola, hola, ¿estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. ¡Ay, marica! At least the supposed poltergeist knows that we should wash our hands after doing the business. This clip, posted by Tiberius Woodbeard, is another one of those blink and you'll miss it type deals. Pay close attention to the doll with the white bonnet and the black pigtails. Kiss? Kiss. It's not a kiss, Elena? Isa. Come on, kiss. Elena? Oh well. She tries. At first, this is just an innocent video of a proud pet owner, but it turns out to be yet another dose of dolly-fueled nightmares. Lily the haunted doll doesn't seem to be a fan of any loud disturbances. She very subtly moves her head towards the noise in an almost sinister way. You certainly wouldn't want to bother this one, would you? After hearing some strange noises coming from the top of their built-in wardrobe, these guys thought they were about to catch a cheeky rodent, but what they never expected was this paranormal punch in the face. Something or someone was staring at them from a hole in the ceiling, maybe stuck in the afterlife, maybe living rent-free in the attic. The face that was only caught for a few seconds sure as hell scared them witless. After reading our fair share of Reddit skinwalker stories, the woods have always been a huge no-go, unless you fancy dancing with the Reaper. But over on the Trey T YouTube channel, he decided to march on down to the woods, camera in hand, hoping to catch something. But the footage he managed to capture would leave him trembling at the sight of a single branch for the rest of his life. For his sake, we hope that was just some guy in a mask playing a prank. But just in case, make sure to watch your back when you're next walking through a forest, because if you hear a few snapping twigs, it might be lurking right behind you. Sershin, one of the hosts from the East Coast Radio, experienced something pretty terrifying during his late night show. But before we watch this creepy video, it's important to mention that according to them, nobody can get into the station without fingerprint authorization, and records show no one entering the studio complex that night, apart from Sershin himself. So, how on earth can we explain this? fingerprint authorization के बिना उस जगह पर मैं कोई जा ही नहीं सकता।
After the lights and desk shut down under mysterious circumstances, he grabbed his phone to report the issue when out of the corner of his eye, he noticed a hooded figure walking past. That alone wouldn't be weird if that area was easily accessed without a fingerprint authorization, which it wasn't. No one was supposed to be there, so much so that he could not find anyone else there throughout the rest of the night. The CCTV cameras also confirmed that no one else had entered the complex at that time of the night, so what could he have seen? And why did the lights and desk shut down in the first place? I guess we'll never know. You might be worried about the inside of your home being susceptible to ghostly happenings and hackers, but you should be equally as wary of the outside too. He never comes back. He never does anything else. Whoever this is, never rings again. Is that what kind of dress or something? Like a wedding dress? Wedding dress? It is creepy how it's just in the dark there, and then boom, out of nowhere. Now, this could have just been somebody waltzing by the camera in a wedding dress, as the uploader seems to believe. But the description of the video states that the figures on the Ring doorbell are never that wispy. They're usually quite crisp. It's also quite common for these cameras to mess up the image a little when movement is captured during nighttime though. This makes sense when we think about the amount of storage required to handle entire days of footage. The solution? Low resolution, resulting in glitches and poor image quality. According to paranormal investigator The Ghost Collector, this baby has been acting strangely for the past few months. Ever since his parents played, at stupid o'clock of course, with a Ouija board they bought from a garage sale, their baby monitor started capturing strange growling noises while their baby stares at corners and laughs uncontrollably, as if he can see someone. But as you're about to see in the following clip, things escalated pretty quickly. Take a look. आवाज सुनो, आई आवाज, गुर्राने की आवाज आई, कम करके हिलाया उसने चीज, क्या मालूम क्या मखलूक है, शैतान है क्या है, गुर्राने की अलग ही आवाज आई है शैतान की। कैमरा भी रुक रुक के चल रहा है, ग्लिच मार रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज है, एनर्जी है, इंटरेक्ट करती है। तो बाहर ही जो फॉरेन के लोग होते हैं बच्चों को अलग सुलाते हैं, अलग से कमरे में, बच्चे को तो इंसान अपने पास सुलाता है भाई। अब क्या हो रहा है, फिर आवाज आ रही है आपको? फिर से आवाज आ रही है कुछ। आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है किसी की, दिखाई कोई नहीं दे रहा है लेकिन आवाज आ रही है रोने की। ऐसा लग रहा है एकदम सामने से आवाज आ रही है। If you listen carefully, it sounds like it's coming from directly in front of the camera. He even went as far as attaching an external microphone to the camera so he could get a better idea of the direction where the sound is coming from. टक 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 की आवाज आ रही है तो कोई भी नहीं बाथरूम में। As this carries on, he decides enough is enough, but he might have made a big mistake.
अच्छा वो जो वॉइस रिपीटिंग वाले खिलौने होते हैं ना, वो लिखी गया वो आवाज, ये खिलौना भी रिपीट करेगा आवाज अगर वो हकीकत में सुनाई देगी। रिपीट कर रहा है क्या? हाँ ये भी रिपीट कर रहा है, खिलौना भी रिपीट कर रहा है आवाज, ये हकीकत में आवाज है। मार रहा उस जगह पे, मार दी, आवाज बंद। बंद हो गई आवाज में। His equipment looks a little out of place, but it's definitely picked up on something. Apparently, this toy picks up on noise and repeats it back to you, and when he holds it down to the road, it seems to repeat back a long, distorted, agonizing wail. As soon as he figures out the exact place where the sound was coming from, he quickly tried hitting the unseen source of the noise, just like it was suggested by one of his commenters. But it clearly didn't work, because in this next clip, we can still see him trying a different approach. नहीं वो फर्क नहीं पड़ा, वापस से आवाज आ रही है, वापस से आवाज आ रही है इसको। पानी, ओ गरम गरम पानी खोलता हुआ पानी लेके जा रहा है भाई ये। पानी डाल दिया गरम गरम, शांति। पानी डाल दिया भूत के ऊपर, इसने तो भूत भी भाग गया गरम पानी। ओहो अब Perhaps the boiling water hitting the supposed spirit shocked it into silence because of its tragic past. Shout out to Charlie Rodriguez for putting together this mini compilation of Satan's spawns. We filtered through them and gathered the creepiest clips of them all. Take a look. बच्चों के हाथ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? Perhaps this is a sign to take those dolls off the kids' Christmas lists. लगा नींद आ जाएगी अच्छे से। आयतल कुर्सी पढ़ के सोइयो भाई, चारों कुल पढ़ के सोइयो। हमेशा पढ़ के सोना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, अपने पर दम करना चाहिए ताकि बुरी चीज़ों से आप बचे रहें। तो ये वीडियो हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, हमारा स्पेशल गेस्ट कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियो जैसे मैंने बताया, टारगेट 100 लाइक का है, व्यूज़ जितने भी जाएं लेकिन 100 लाइक आने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस टाइप के और भी वीडियोस हैं जो जानकारी वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। कई मिस्ट्रीज़ हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया की निगाहों से छुपी हुई हैं लेकिन हकीकत में होती हैं। अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हैं, आसमानी मामलात हैं, ज़मीनी मामलात हैं, वो भी काफ़ी अलग टाइप के वीडियोस रहेंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सेगमेंट नया शुरू किया, नई प्लेलिस्ट शुरू करिए, इसको भी आप अपना सपोर्ट देना मेरे भाई। तमाम लोगों से गुजारिश है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जोर से बोलो। हाँ चलिए, अल्लाह हाफिज़।